In this video, you are going to learn how to use articles a, an and the. Guys, इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि आर्टिकल्स a, an and the को इंग्लिश में कैसे इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंसेस के ज़रिए ये आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर a, an और कहाँ पर the को लगाते हैं। तो चलिए सेंटेंसेस देखते हैं, ये बात आपको क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन। मेज़ पर एक किताब है। There is a book on the table. There is a book on the table. किताब जो मैं पढ़ रहा हूँ बहुत दिलचस्प है। The book which I am reading is very interesting. The book which I am reading is very interesting. मैंने एक कुर्सी खरीदी है। I've bought a chair. I've bought a chair. जिस कुर्सी पर तुम बैठे हो आरामदेह नहीं है। The chair on which you are sitting is not comfortable. The chair on which you are sitting is not comfortable. डेस्क पर एक पेंसिल है। There is a pencil on the desk. There is a pencil on the desk. ये वो पेंसिल है जो तुमने मुझे दी। This is the pencil which you gave me. This is the pencil which you gave me. बाहर एक आदमी है जो आपसे मिलना चाहता है। There is a man outside who wishes to see you. There is a man outside who wishes to see you. आज रात पढ़ने के लिए एक अच्छी किताब चाहता हूँ। I want a good book to read tonight. I want a good book to read tonight. मैं जो किताब पढ़ रहा हूँ असलम की है। The book which I am reading belongs to Aslam. The book which I am reading belongs to Aslam. सोना एक अहम धात है। Gold is an important metal. Gold is an important metal. इस अंगूठी का सोना बहुत पुराना है। The gold in this ring is very old. The gold in this ring is very old. ईमानदारी हमेशा बेहतरीन पॉलिसी होती है। Honesty is always the best policy. Honesty is always the best policy. असलम की ईमानदारी शक व शुबह से बाला है। The honesty of Mr. Aslam is above board. The honesty of Mr. Aslam is above board. मैं लाहौर में रहता हूँ। I live in Lahore. I live in Lahore. मैंने सुना है वो इंग्लैंड जा रहा है। I've heard that he's going to England. I've heard that he's going to England.
लाहौर एक बहुत बड़ा शहर है। लाहौर is a large city. लाहौर is a large city. क्या तुमने कभी लाहौर के अजायब घर की सैर की है? Have you ever visited the Lahore Museum? Have you ever visited the Lahore Museum? बढ़ते हुए बच्चों के लिए ताज़ा हवा ज़रूरी है। Fresh air is a must for all growing children. Fresh air is a must for all growing children. इस कमरे की हवा ताज़ा नहीं है। The air in this room is not fresh. The air in this room is not fresh. उसने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से BA किया। He graduated from the Government College Lahore. He graduated from the Government College Lahore. लड़के को सेंट्रल मॉडल स्कूल में दाखिल कर दिया गया। The boy was admitted to the Central Model School. The boy was admitted to the Central Model School. वो चीफ इंजीनियरिंग के दफ्तर में काम करता है। He works in the office of the chief engineer. He works in the office of the chief engineer. लाहौर दरियाए रावी के किनारे वाक़या है। लाहौर is situated on the bank of the Ravi. Lahore is situated on the bank of the Ravi. कोय अमालिय हिंदुस्तान के शुमाल में वाक़या है। The Amaliyas lie to the north of India. The Amaliyas lie to the north of India. हवाई जहाज बैर ओकियानोस के ऊपर उड़ रहा था। The aeroplane was flying above the Atlantic Ocean. The aeroplane was flying above the Atlantic Ocean. वो कुरान ख़वानी कर रहा था। He was reciting the Quran. He was reciting the Quran. बादशाही मस्जिद औरंगज़ेब ने बनवाई थी। The Badshai Mosque was built by Aurangzeb. The Badshai Masjid was built by Aurangzeb. ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। The earth revolves round the sun. The earth revolves round the sun. उसकी कहानियाँ अमूमन उर्दू डाइजेस्ट में छपती हैं। His stories are often published in the Urdu Digest. मैंने ये किताब फेरोज़ सन्स से ख़रीदी। I bought this book from the Feroz Sons. I bought this book from the Feroz Sons.